In simple equation, we were on exercise last, algebra, last exercise on question number 3. So in question number 3, if you remember, the question is telling you, pick out the solution from the values given in the bracket next to each equation. Show that the other values do not satisfy the equation. Okay, I am just showing you how to show the satisfy or not. So it's question number 3. This is algebra. And today's date is 6th of Jan, no? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, do the camera a little bit up. Okay, fine. So this is fine. So this is third. Yes, ma'am. Yes. Number A. So if you talk about question number A, it's telling here 5m is equal to 60. Okay, and the values are given here 10, 5, 12 and 15. Now question is asking from us that you have to tell that one value is satisfying this equation, other are not satisfying it. So we have to show that how it is not satisfying. For example, suppose if you take 5m का मतलब कितना होता है बेटा 5 into m. So we need 5 into m is equals to 60 आना चाहिए. So let us put the value. सबसे पहले हम लोग put करके देखते हैं 10. So 5 into 10, what comes? 50. 50. आना कितना चाहिए? 60. आना कितना चाहिए? 60. So it means it is not equal. This is the sign of not equal to. Now moving on to the second value. 5 into, now we will put the next value. 5 into 5, 25. Again, आना कितना चाहिए? 60. जो कि नहीं आ रहा है. This is also wrong. Now moving on to the third thing. That is 5 into 12. 5 into 12. 12 into 5 gives you as 60. So which is equal to 60. It means इसका आंसर कौन सा सही है? 12 वाला सही है. Now let us put the next value also. That is 5 into 15. Now 5 into 15 what comes? 75. आना कितना चाहिए? 60, which is not equal. It means if you see in this question only one value is correct. Which value is there? That is 12. It means the answer for this question, or you can m is equal to 12. The answer for this question is m is equal to 12, or you can call it as solution is 12. This is the complete solution for this question. Like if you have been given 4 values, you have to put one by one all, and you have to show that which value is satisfying this equation. Okay, this is the complete solution what we have to do in this question. Okay, now what we are going to do, I want to discuss. Third D question is q by 2 is equal to 7, and let's have the values 7, 2, 10 and 14. We have these values. Okay, so let us put one by one all the values here. Let us put the values. First one I am putting as 7. तो सबसे पहले मैंने रख दिया यहाँ पे q की जगह पर 7 अपॉन में 2. Now 7 upon 2 जब हम सॉल्व करते हैं we get 3.5. We get 3.5. But आंसर कितना आना चाहिए? 7, which is not correct. ठीक है, so first value is wrong. Now moving on to the second value. q की जगह पर हम क्या रखेंगे यहाँ पर 2. So it will be 2 by 2. 2 by 2 को जब हम सॉल्व करते हैं the same number divided by same number, answer will come 1. But आना कितना चाहिए? 7. It means it is also not equal. Now let us put the third value, that is 10. So 10 upon 2. 10 upon 2 means what? Comes 5. But आना कितना चाहिए? 7, which is not equal. Now let us put the last value, that is 14. So 14 upon 2. 14 upon 2 which gives us 7. और आना कितना चाहिए था? 7 ही. So it means this value is correct here. So it means q is equal to 14. So you will write it down. Solution is 14. This is the complete solution for this question. Now I hope
So now let's move ahead. This is exercise 11.5, question number 3F. So now question number 3F, we have this equation and these are the values. Let us try one by one. So I am putting in place of x because x is unknown here. So यहाँ पर रखा मैंने -2, ये है plus, ये है 4. I am taking LHS only and I have to check that whether RHS is coming or not. Now when you solve it, -2 plus 4 which will give us 2. क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 2 और आना कितना चाहिए 2. It means this solution is correct. ठीक है, this value is correct. Now let us put other values. -2 की जगह पर अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 0 रख दिया. +4 is equal to 2. नहीं सॉरी, 0 + 4 is equals to 4. आना कितना चाहिए था 2, which is not coming. So this is wrong. Now coming to next thing. Again put the value in place of x. x की जगह पर क्या रखेंगे अब 2 रख दिया. This is +4. 2 + 4 कितना होता है 6 होता है. But आना कितना चाहिए 2. It means this is also wrong. Now coming to the last situation, that is we have to put 4. So this is 4 + 4 which will give us 8. आना कितना चाहिए 2. So this is again not equal. So it means if you try to understand this question, you have been given 4 values for the question, but you have seen that only one value is correct for this question. It means out of 4 values, जो ये 4 values आपको दी थी -2, 0, 2 and 4, इसमें से correct कौन सी है, केवल एक correct है. कौन सी वाली correct है, -2 वाली correct है. It means the answer of x is -2. The answer of x is equals to -2. That it means you will write it down. Solution is -2. This is finished. So this is question number 4 and I'm talking about A. Okay. Now here it is telling m plus 10 is equals to 16. क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है बेटा. it will come properly because it is getting dry. So m plus 10 is equals to 16. ठीक है, m plus 10 is equals to 16. It is already given in the question. Now let us see the table. The table is drawn and in that table upside it is written m. Here it is written 1, here it is written 2, here it is written 3, here it is written 4, 5. I am taking till 6 and you will take it down, you will take it till forward till 10. ठीक है, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है m plus 10. नीचे लिखा हुआ है m plus 10. Now what we have to do, we have to basically put the values. m plus 10 is equals to 16. आपको केवल इसका LHS लेना है. LHS means left hand side. Now it is telling m plus 10. हमारा पास LHS क्या है, m plus 10 है. अब हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यूज रखेंगे, एक एक करके वैल्यूज रखेंगे. देखो सबसे पहले m की जगह पर क्या रखेंगे 1, बिकॉज द फर्स्ट वैल्यू इज टेलिंग m की जगह क्या रखना है हमको 1. तो सबसे पहले मैंने m की जगह पर रखा 1, प्लस वाला प्लस एज इट इज रहेगा, 10 एज इट इज रहेगा. नाउ 10 plus 1 कितना होता है, कैन यू टेल मी 10 plus 1 कितना होता है 11. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11. यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 11. अब m की जगह पर क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे. m की जगह पर क्या रखेंगे हम 2. तो 2 पर 2 plus 10 कितना होता है, कैन यू टेल मी 12. व्हाट विल बी देयर 12. तो यहाँ पर हम रखेंगे 12. ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे 12. अब नाउ यू टेल मी नेक्स्ट, m की जगह पर क्या रखेंगे हम 3 रखेंगे. तो 3 plus 10, 3 plus 10 कितना होता है 13. ऊपर आ जाएगा 13. चलो 13 लिख दिया. अब नेक्स्ट क्या रखेंगे 4 रखेंगे. तो 4 plus 10 व्हाट कम्स 14. We'll put it 14 now. अब हम नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे 5 रखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में बोल रहा है 5 रखने के लिए.
तो 5 plus 10 कितना आ रहा है? 15. Put it 15. Now next number, that is 6. So 6 plus 10. What is coming here? 16. हमें क्या चाहिए था बेटा? m plus 10 is equal to कितना चाहिए था? 16 चाहिए था. हमारे क्वेश्चन में कितना चाहिए था? हमको m plus 10 is equal to 16 चाहिए था और हमें 16 मिल गया. 16 कब आया? Can you tell me 16 कब आया जब हमने m क्या रखा? What we have put? Can you tell me? m into 6, from 6 plus 10 is equal to 16. Yes, absolutely. जब हमने m पे 6 रखा तब हमको 16 मिला. जब हमने m की जगह पर 6 रखा तब हमें 16 मिला. इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो ये वाला सही है. मतलब m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 6 आएगी. m की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 6 आएगी. Remember this. ठीक है? So the value Ma'am, you have to of circle that. yes, you have to circle that. ठीक है? उसके बाद भी आपको फॉरवर्ड करना है because आपकी बुक में you have more values. 3. So if you will see this question, in place of t I have put 3. So 5 3s are what comes? 15. So मैंने रख दिया यहाँ पर 15. ठीक है? Now what is the next value? The next value is 4. तो t की जगह पर हमने क्या रख दिया? 4. तो 5 into 4. 5 into 4 comes 20. So I'll put it here 20. I have to just replace the values which are given here. Now again 5 into next value क्या रखनी है हमको? 5 रखनी है. तो 5 into 5 what comes? 25. So I have placed it here 25. ठीक है? Now next value 5 into 6 because I need here 6. 5 6 are what comes? 30. यहाँ पर कितना आ गया? 30. 30 रख दिया. अब आती है नेक्स्ट वैल्यू that is 5 into 7. Now 5 into 7 what coming? 35. अब एक बार जरा क्वेश्चन को गौर से देखिए. Ma'am, we replace t into 7, ma'am. 5 multiplied by 7 is equal to 35. Yes, very good. This is only the value which is giving us 35. और हमें कितना चाहिए था? 35 ही चाहिए था. It means our answer is t is equal to 7. t is equal to 7. ठीक है? So now हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकिन हम लोगों को पता चल गया है कि हमारा आंसर जो है वो ये वाला सही है. ठीक है? हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा लेकिन हम लोग को ये पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो 7 है. तो रिमेम्बर दिस इन्वेस्टिगेशन वैल्यू का इन्वेस्टिगेशन मेथड का मतलब ये होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कोई सामान चोरी हुआ. ठीक है? हमारे घर में कोई सामान चोरी हो गया और किसी ने ले लिया. उस दिन पता चला कि हमारे यहाँ एक पार्टी थी. अब उस पार्टी में सपोज 15 लोग आए थे. अब हम किस पे शक करेंगे? हम तो सभी पे शक करेंगे पहले. तो जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि किसने कौन असली चोर है तो हम एक एक करके सबके ऊपर दिमाग लगाएंगे कि पहला वाला भी चोर हो सकता है, दूसरा वाला भी हो सकता है, तीसरा वाला पर्सन भी हो सकता है, चौथा वाला पर्सन भी हो सकता है. जब तक हमें एकदम करेक्ट आंसर लास्ट तक नहीं पता चलेगा, we will be doing till last that which is the correct culprit here. So the same thing in this question also you have to investigate. There are different values are given in the table, many values. आपको एक एक करके रखते जाना है और उसके बाद लास्ट में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें सही आंसर कौन सा है. I hope it is clear. If you find in this question we have been given z upon 3 is equal to 4. Now let us try to put the value one by one. सबसे पहले z की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में? 8 दी है. तो हम z की जगह पर क्या रख देंगे? 8 upon 3. अब 8 upon 3 तो सॉल्व नहीं होने वाला भाई, लेकिन हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ कैन वी कन्वर्ट इट? 3 2 जा 6 and this is 2. So it will give us 2 whole 2 by 3. ठीक है? 2 whole 2 by 3 when you will put the value. अब हम नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे इस पे. नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? 9 है. So let us put in place of z we will put 9. So 9 upon 3. Now 9 divided by 3 which will give us directly 3. So we will put it here 3. ठीक है? Now moving on to the next situation. Next situation is 10.
10/3 बिकॉज z की जगह पर हमने रख दिया 10, तो 10/3 अगेन 3 3s are 9 and 1 whole, so here it would be 3 whole 1/3. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 whole 1/3. ठीक है, let us put 11 now in place of z. When you will put 11, it will give us 3 3s are 9 and here it will be giving you now 2. Okay, it will give us 2 now. So 3 whole 2/3 will come. Okay, now the same thing when you will put here 12, so it will give us 4 whole, जो कि अभी आपको मैंने बताया भी था. It will give us 12/3 which will give us 4, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 whole 1/3. So I am just writing down by seeing the pattern. I'm just writing by seeing the pattern here. So remember, now you only know that this is the value which is correct for this question. This is the value which is correct for this question. So it means always remember that you have to investigate, and after investigating you have to keep on putting the values. ठीक है, जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी है वो आपको एक एक करके पुट करके देखते जानी है, और आपको एक समय आएगा जब आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला उसमें सही है, और जो सही है वही उसका आंसर है. यस, very nice. It is telling go around the square and beta use chat box please, counting every corner. Now we know that we have 4 corners in the, now it is telling thrice. Now thrice and no more, thrice it and no more, and thrice and no more means we had 4 corners and you are thricing it. Thrice करने का मतलब होता है उसको 3 times कर दो. So 4 multiplied by 3. Now you will get it 12. Yes. Then it is telling add the count to me to get exactly 34. Now ऐसा क्या add करें हम उसमें so you will get 34. Now these are the riddles which you have to think twice in your mind and solve like this only. आप अपना दिमाग यूज करिए, इन रिडल्स को सॉल्व करिए. अगर आपको नहीं बनेगा वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. ठीक है, so for today we have completed this algebra chapter. ठीक है, but remember don't forget to join the class of Friday, because on Friday I am going to teach you the simple equation.